Hello everybody, how are you? I hope you all are fine there. As you all know that nowadays technology is progressing at a very fast rate. Each and every work is being done with the help of computers in a fraction of seconds. Communication services in our country share our thoughts and ideas even far off countries also. So today in our topic also, we're just going to see internet and communication tools and also about social networking sites. So let's start with the slides. First of all, we'll just see meaning of communication services. Now, how communication services are being done. Now, communication services like email, Usenet, blog, and internet telephony allows us to connect and share our thoughts and views with anyone or almost everyone in the world while sitting at your own place. So, as you know कि communication services जो हैं जैसे ईमेल, यूजनेट, ब्लॉग, इंटरनेट, टेलीफोनी, ये सारा हम कैसे कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट और शेयर कैसे कर सकते हैं अपने थॉट्स एंड व्यूज़. कहीं पर भी कहीं से भी हम बैठकर एक दूसरे के साथ अपने शेयर आइडियाज़ जो है शेयर कर सकते हैं, थॉट्स शेयर कर सकते हैं. लेट्स से सपोज कर लो यू आर हेयर एंड योर फ्रेंड इज़ स्टेइंग इन अब्रॉड, सो यू कैन जस्ट कनेक्ट योर व्यूज़ एंड थॉट्स विद योर फ्रेंड with the help of communication services. ठीक है. Now, communication is the most important features of the internet. ठीक है, ये एक important features है इंटरनेट का, and we can easily and quickly communicate, interact and share data such as text files, pictures, videos and audios with others using the internet. So communication के ज़रिए हम क्या क्या शेयर कर सकते हैं. हम अपनी टेक्स्ट फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, पिक्चर्स को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं एंड ऑडियोस. ठीक है. देन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट स्लाइड में वी जस्ट गोइंग टू सी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन टूल्स. ना व्हाट आर द मीडियम जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. दे आर नोन एज ईमेल, e-community, blog, social network, then many more are also there. We'll just see turn by turn the definition of everything. First of all, electronic mail. Short में आप इसे क्या कहते हो? It's email. Now, email is a communication system that sends and receives messages via internet by using specific email addresses known as email IDs. Mail services like Gmail, Yahoo Mail, Rediff Mail are available. Now, email क्या है? एक ज़रिया आपका मैसेज भेजने का, रिसीव करने का. ठीक है. एंड हाउ डू यू सेंड द ईमेल्स? यू हैव सम स्पेसिफिक ईमेल एड्रेसेस. ठीक है. आपके पास आईडीज़ होती हैं, ईमेल आईडीज़ होती हैं. आप उन आईडीज़ को यूज़ करके जीमेल के थ्रू, याहू मेल के थ्रू या रेडिफ मेल के थ्रू आप अपनी मेल्स एक जगह से दूसरी जगह पर सेंड करते हो. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल? नाउ यू कैन ऑल्सो सेंड एंड रिसीव मेल्स वेरी फास्ट फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. ठीक है. एक जगह से दूसरी जगह पर आप मेल्स को बहुत जल्दी से भेज सकते हो एंड इट कंज्यूम्स लेस टाइम. ठीक है. ईमेल भेजने के लिए लेस टाइम यूज़ होता है. अटैचमेंट्स कैन बी सेंट. ईमेल के ज़रिए हम किसी को भी फ़ोटोज़ भेज सकते हैं. ठीक है. एंड देयर आर नेग्लिजिबल चांसेस of a message being lost. Whenever you're sending the message through email, आपके messages lost नहीं होते हैं. Safely it reaches to the destination. Now, creating an email account. I hope you all are having the email account in one of the IDs, in one of the mails. ठीक है. Now, in order to open any email account, what are the steps you have to follow? First of all, you have to open any web browser. कोई भी web browser खोलोगे जिसमें कि you have to open Google Chrome, Internet Explorer and Mozilla Firefox. Any one you can open from these. ठीक है. कोई एक खोल लिया and after opening it, type any of the email service provider names in the address bar of the browser. ठीक है. जब आप ब्राउज़र ओपन करते हो, जस्ट
टाइप द ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नेम. जैसे सपोज कर लो यू वांट टू ओपन जीमेल. So if you want to open Gmail, you will type as http www.gmail.com. So when you will type this gmail.com, the home page of gmail.com will get open. Now what you can do is you can click on the create account button. Create account button पे click करोगे and there the registration form will appear. ठीक है. जैसे आप कहीं किसी जगह पर जाते हो, वहाँ पर कोई भी कहीं पर भी आपने रजिस्टर करने के लिए you fill the form. Similarly here in the account also you have to fill the form. A registration form will appear and you have to fill in the registration form with the details asked and submit it. ठीक है. फॉर्म फिल करने के बाद you have to submit it. Then a message will appear congratulating you for creating your account. So once if your registration is over, you will get one message of congratulations कि आपका account open हो गया. ठीक है. And then you can click on the sign out button to get yourself logged out from there. ठीक है. अगर आप उसमें से अपनी मेल में से बाहर आना चाहते हो तो यू हैव टू मेक यूज ऑफ साइन आउट बटन. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट कंपोजिंग अ मेल. इफ यू वांट टू जस्ट कंपोज द मेल, व्हाट ऑल स्टेप्स विल यू फॉलो. ठीक है. किसी ने मेल भेजनी है तो व्हाट ऑल स्टेप्स यू विल फॉलो. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन द कंपोज बटन. ठीक है. You will click on the compose button and after you click on the compose button, the new message screen is displayed. ठीक है. इस तरह से एक screen display होगी. You have to write the email of the person to whom you want to send the mail in the to box. Just see to box over here. So here you will write the address of the person to whom you are sending the mail. And after that, also write the subject of the email message in the subject box. So here you have the subject also. You have to write the subject in the composing mail box. Then type then on the blank screen you can type the email message in the white blank area and then click on send button to send the mail. ठीक है. Now the next slide में we are just going to see social networking through social media sites. As you all know कि nowadays you're just making use of social networking sites. ठीक है. Like Facebook you're making use, Twitter you're making use, and there are many more also. So online communities that let people come together, communicate and share things such as pictures, videos, projects, etc. are known as social networking or social media sites. ठीक है. So what all things you can do from social media sites? आप pictures भेज सकते हो, videos भेज सकते हो, किसी भी तरह के projects भेज सकते हो. ठीक है. From Facebook, Twitter, LinkedIn or Instagram. ठीक है. Now we'll just see first of all Facebook. Facebook, it is the most popular and widely used website, widely used media websites where users can share status, updates, pictures, videos and web content with their friends. As you all know कि Facebook is widely used nowadays. बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं. ठीक है. What all things you can do here? You can just share status. Status share कर सकते हो. आप अपडेटिंग कर सकते हो किसी भी तरह की, पिक्चर्स शेयर कर सकते हो, वीडियो शेयर कर सकते हो and web content with your friends. Now do you know the name of the person who invented Facebook? The person who invented the Facebook was Mark Zuckerberg. In the year 2004, he invented this Facebook. You all know that Instagram is a social application for instantly enhancing photographs and videos with amazing effects and then sharing them across a number of social media websites. ठीक है. इंस्टाग्राम भी एक ज़रिया है जिसके साथ आप अपनी फोटोग्राफ्स, वीडियोस भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पर. Now next slide we are just going to see about Twitter. Twitter is also a popular social application for instantly enhancing photographs and videos with amazing effects and then sharing them across a number of social media websites. So Twitter के ज़रिए भी आप अपनी photographs, videos या फिर कोई और किसी भी तरह का डाटा आप जो send कर सकते हो. ठीक है. Now we'll just see the next slide. Next slide में
P interest is given. Now P interest, what is this? P interest is also a free pinboard style photo sharing site, ठीक है, an application where users can create and manage theme based image collections like interest, hobbies and recipes, ठीक है. ये भी एक फोटो शेयरिंग साइट है जहाँ पर आप अपनी फोटोज को, इमेजेस को शेयर कर सकते हो. Then chats, instant messaging and news groups. We can also communicate with people sitting far off from us using the chats and the instant messaging programs. We can also communicate by using news group. You might have seen कि आप chats के ज़रिए भी एक दूसरे के साथ communicate कर सकते हो. Like nowadays we are just making use of WhatsApp, ठीक है. Then Chatrooms, the service in which multiple users talk to each other in real time by posting the messages on the topic of common interest is known as chat room. आपने देखा होगा कि आजकल we are making use of chat room, ठीक है. These chat rooms are available on the sites teenchat.com, tinychat.com, teenspot.com, ठीक है. Multiple users एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं एक ही रूम से, ठीक है. Then instant messaging, a communication service over the internet which allows instant transmission of text-based messages from sender to receiver is known as instant messaging, ठीक है. आप एक जगह से दूसरी जगह पर instant messages भी कर सकते हो एक दूसरे को, ठीक है. Then Hike Messenger, Hike Messenger भी एक chat messenger है made in India. It allows chatting and sharing files. इसके साथ भी आपकी chatting हो जाती है, files share हो जाती है, even without an internet connection and zero balance, ठीक है. Even अगर आपके नेट में बैलेंस नहीं होगा, then also you can make use of Hike Messenger. You can chat within 100 meters to a friend. 100 meters की दूरी पर आप अपने फ्रेंड के साथ एक दूसरे के साथ Hike Messenger से बात कर सकते हो and there will be no charges done for that, ठीक है. Then common features of messengers. What are the features? Messengers के features क्या होते हैं? Advantages क्या होते हैं? Hidden mode, 5000 प्लस फ्री स्टिकर्स इसमें होते हैं. शेयर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स होती हैं. ग्रुप चैट्स कैन बी डन. देन चैट थीम्स कैन बी डन. फ्री हाई कॉल्स कैन बी डन एंड फोटो फिल्टरिंग कैन बी डन. आजकल आप देखते हो कि कोई फोटो क्लिक किए, आप फिल्टर्स लगा के उसे बहुत सुंदर बना देते हो, ठीक है. देन न्यूज़ ग्रुप. News groups are posted on the bulletin board where it can be read and responded by any member. Now what is a blog? आपको पता है कि जब आप कोई अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नेट पर डालते हो, so that can be done by making use of blogs. So you can define it as a website in which articles are posted regularly and displayed on reverse sequential order, that is known as blog. So blog create करने के लिए you can just go on the site blogger.com or blogspot.com. Then comes your e-greeting. An electronic card is a special occasion greeting or postcard created and customized within a website and sent through the internet to the recipient. You might have seen कि आजकल कोई किसी का बर्थडे आता है, कोई और ओकेजन आता है, तो यू जस्ट सेंड द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स टू देम. ई ग्रीटिंग्स बनाकर आप व्हाट्सएप कर देते हो उनको, ठीक है. देन कम्स योर क्लाउड कंप्यूटिंग. ना जब आपके फ़ोन में या मोबाइल में या लैपटॉप में बहुत सारा डाटा स्टोर करना होता है, देन इन दैट केस यू कैन मेक यूज़ ऑफ cloud computing. It is a kind of internet-based computing services that provide access to data and shared processing resources on demand. जब भी आपको चाहिए तो आप वहाँ से डाटा निकाल कर यूज़ कर सकते हो. YouTube. You are very familiar with this thing. Now YouTube is an online public communication site. You can view and upload videos on any topic in the world on this website, ठीक है. Anyone who visits the sites can view the videos that are posted on these sites. अब YouTube में like for example nowadays online study you can just make use of YouTube for making use of online studies, ठीक है.
So any website you can visit and you can just get the data from that website. Then comes your internet telephony, a group of hardware and software that enables people to use the internet as a transmission medium for telephone calls can be termed as internet telephony. जैसे स्काइप के ज़रिए आप दूसरे के साथ चैटिंग करते हो, कूल टॉक के ज़रिए करते हो, नेट मीटिंग के ज़रिए करते हो. All this comes under internet telephony. So this was all about the slides. I hope each and every point is clear to you. So, thank you everybody and happy learning.